everyone, welcome to CNA Daily Newspaper Analysis. Today we are back with the following articles that you can see in the index. Okay, and we will all start with the very first topic amongst GS1 paper, that is about a Buddhist shrine that was recently has been allocated. That was actually a Hindu shrine, but it was allocated to the Buddhists after the High Court intervention. So I was talking about the Thalaiveti Munyappan temple that is directly near Salem in Tamil Nadu, where a local deity is worshipped as per Hindu rituals. But now it will be treated as a Buddhist temple. Thereby, it is a respective Madras High Court order which directly put forwards the intermigration of the High Court in such number of religious affairs. So we have seen that this respective order of the High Court was based very basically on technical and scientific inspections of the deity, because at that point of time, the Buddhist has got a claim that they have been very much believed that the Buddhist shrines before they were converted into Hindu temple by force. And due to this Buddhist shrines were converted to such number of shrines. Okay, and hence we can see that this happened during the time when there was a decline of the Buddhism over centuries. Okay, so if I have to say about some of the shrines that we have seen in today's time, we can see some of the important shrines that we have today in our country, be it the Hemis shrine of the in Ladakh, then we can see the Tabo in Spiti Valley of Himachal Pradesh, then we can see Tawang in Arunachal Pradesh. Okay, so in every particular perspective, we can see that these Buddhist stupas or these Buddhist shrines are an important element of the people who believes in the Buddhist culture or the Buddhist religion. See, if I have to say about the respective Buddhist stupas, the Buddhist stupas were built at places where Buddha's remains were preserved and at the major sites where important events in Buddha's life took place. Okay, and these stupas were built on huge mounds of mud, or it may be enclosed in carefully burnt small standard bricks. Okay, and it has got a form of structure comprising a hemispherical dome. अगर मैं एक बुद्ध श्राइन को अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करने जाऊँ तो it is something like this. Okay, ये एक ऐसी चीज होता है यहाँ पे. Okay, and here we can see such number of dome directly situated. यहाँ पे अगर मैं एक डिफरेंस करने जाऊँ तो यहाँ पे एक ऐसा टाइप का एक स्ट्रक्चर रहता है और ऊपर एक पर्टिकुलर ऐसा रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं छत्र. CHATRA, छत्र. ओके, इस चीज को बोलते हैं हम लोग हर्मिका. HARMIKA, हर्मिका. ओके, इस पर्टिकुलर सेमी डॉम को बोलते हैं हम लोग अंडा. ANDA, अंडा. ओके, और ये जो देखे तुम लोग नीचे, दिस इज कॉल्ड एज मेधी. MEDH, मेधी. This particular area where you can see these are the enclosure walls. Okay, ये enclosure walls. So because of such number of positions, we can see that the stupa is glorified very beautifully in this respective mounds, and it was once the resting place of the bones and ashes of a holy man. So because of such number of tradition, after the great demise of the Lord Buddha, okay, even various number of people, be it Ashoka, he decided to construct a large number of stupas, and he directly took inspiration from such number of designs. Okay, so if I have to say about some of the very positions or some of the very gestures we can see with respective to Buddha, okay, we can see that Buddha is very much in a position or in a very much in a mudra. So अगर मैं मुद्रा का बात बोलूँ तो मुद्रा क्या होता है? It is a position of hand often depicted in Buddhist art and it is used in practice to evoke a particular state of mind. एक स्टेट ऑफ माइंड दिखाने के लिए ये मुद्रेस हम लोग दिखाते हैं. ठीक है, सो यू कैन सी अबाउट द धर्म चक्र मुद्रा. तो धर्म चक्र मुद्रा में क्या होता है? इट इज द टीचिंग ऑफ द व्हील ऑफ धर्म. देन वी कैन सी अबाउट द ध्यान मुद्रा. ध्यान मुद्रा में क्या होता है? इट्स अ पर्टिकुलर योगा मुद्रा और द समाधि मुद्रा. देन हम लोग जानते हैं भूमिस्परा मुद्रा. भूमिस्परा मुद्रा क्या होता है? इट इज द टचिंग द अर्थ व्हिच रिप्रेजेंट्स द मोमेंट ऑफ द बुद्धास अवेकनिंग. ओके, देन वी हैव सीन वरदा मुद्रा. ओके, देन हम लोग के पास करना मुद्रा है. देन वी हैव वज्र मुद्रा. देन वी हैव वितर्क मुद्रा. देन अभय मुद्रा. देन वी हैव उत्तर बोधि मुद्रा. देन वी हैव अंजलि मुद्रा. तो ऐसे करके हम लोग के पास 10 मुद्रा है.
which directly depicts something or the other with respective to this belief of the Buddhist. ओके तो ये थोड़ा बहुत हम लोग का एक पर्टिकुलर न्यूज में है। तो ये न्यूज ठीक है, यू शुड नो अबाउट द रेस्पेक्टिव टेम्पल विच डायरेक्टली गॉट इट्स पर्टिकुलर रिकॉग्निशन, जो पहले हिंदू टेम्पल था और अभी हाई कोर्ट ने इसको बोल दिया कि दिस शुड बी डायरेक्टली अ बुद्धिस्ट श्राइन बिकॉज इट हैज गॉट अ पास्ट हिस्ट्री। तो बस ये टेम्पल का जो नाम है दैट इज द थल्लाइवती मुनियप्पन टेम्पल, तो ये थोड़ा याद रखना। और ऊपर से सिंस दिस बुद्धिस्ट श्राइन इज पर्टिकुलरली न्यूज, तो ये मैंने जैसे बोला ये डोम स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर्स का पोजीशंस क्या क्या है, कौन से क्या बोलते हैं, ठीक है। एंड ऑब्वियसली व्हाट इज द डिपिक्शन ऑफ सच नंबर ऑफ जेस्चर्स, तो जो मैंने बोला तो वो सब थोड़ा देख लेना, दैट विल बी वेरी मच ऑफ important as well as very much of relevant for your exam perspective। तो ये रहा हम लोग का वेरी फर्स्ट टॉपिक। देन आता है हम लोग का सेकंड टॉपिक दैट इज द नेवी women pilots। So see, when I am talking about the Navy women pilots, we can see that in today's time, the respective area or the various expansion of women in various other fields, not only in the armed forces, not only in the navy, we can see that the women's participation or the women's empowerment has drastically increased. Okay, so we can see that all these particular five officers, lady officers, okay, this women navy crew completes surveillance of a mission over Arabian Sea, and they used a particular aircraft that is the Dornier 228 Dornier 228 aircraft, and they directly belong to the Indian Naval Air Squadron of 314। So this thing you should know। तो ये एक पर्टिकुलर स्क्वाड्रन है दैट ये लोग डायरेक्टली जो हम लोग का रिनाइसेंस करते हैं, जो हम लोग का सर्वेलेंस करते हैं अराबियन सी का, तो इन्होंने अकेले नॉट guarding or not directly commanding by any of the male members, they have directly associated themselves with such number of ideas। तो इसीलिए ये पर्टिकुलरली एक थोड़ा न्यूज है। ओके ये न्यूज में है। एंड दिस पर्टिकुलर INS 314 स्क्वाड्रन यू कैन फाइंड इन पोरबंदर गुजरात। पोरबंदर गुजरात में हम लोग को मिलता है और ये डॉनियर 228 यूज करते हैं, ठीक है। तो दिस आर द थिंग्स दैट यू हैव डायरेक्टली सीन। ओके तो ये डायरेक्टली हम लोग को बोला गया है कि दिस इज द एवर ग्रोइंग नारी शक्ति that we are directly seeing as of today। तो ये थोड़ा एक relevant information है with respective to this particular thing। तो यहाँ पे हम लोग को like you should know about the geography of the Arabian Sea। तो Arabian Sea कौन सा कोस्ट में आता है हम लोग का, what is the respective coast। supposedly अगर हम लोग बोले तो we have got Konkan coast, we have got Malabar coast in this respective western area। तो हम लोग का मानसून भी उसी तरह से घुसता है that is towards from the western east। ओके तो अरेबियन सी में हम लोग किस किस के कंट्री के साथ हम लोग मैरीटाइम बाउंड्री शेयर करते हैं। तो दिस ज्योग्राफीज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज रेलेवेंट। ओके तो ये चार चीज देख लेना बिकॉज द अरेबियन सी currently इज इन न्यूज। ओके तो ये रहा हम लोग का सेकंड पॉइंट। देन आते हैं थर्ड में दैट इज द फैमिली कोड पे। See, now we can see that every particular activities associated with family issues, families disputes, okay, they are solved by the respective family codes। Okay, तो अभी ये क्या चल रहा है? Like we can see that if I talk about family codes, we can see that Family Codes Act of 1984 was enacted for the establishment of such number of family codes with a view to promote, क्या क्या प्रमोट करने के लिए बनाया था? Conciliation and secure speedy settlement of disputes relating to marriage and family affairs and for other related affairs or disputes that is inside or within the respective family। तो ये पर्टिकुलर चीज है इस फैमिली बिल के तहत। तो यहाँ पे जो फैमिली बिल और फैमिली कोर्ट में जो हम लोग का अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस होता है, द स्टेट गवर्नमेंट में विद द कंकरेंस ऑफ द हाई कोर्ट अपॉइंट वन और मोर पर्सन्स टू बी द जज ऑफ द फैमिली कोर्ट। तो ये स्टेट गवर्नमेंट और किसके ऊपर का काम है? हाई कोर्ट। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का रोल नहीं होता है। और we do not see the role of the higher judiciary or the apex judiciary, that is the Supreme Court over here। तो ये एक particular association है for the respective welfare of any form of disputes that is directly arising between some of the family members। Okay, तो अभी ये क्यों न्यूज में है? Because recently we can see that Rajya Sabha on last Thursday, okay, last Thursday it passed the Family Codes Amendment Bill 2022 by some of the voice vote, and the bill makes provision to grant statutory cover to family courts set up in Himachal Pradesh and Nagaland। तो recently because हम लोग जानते हैं कि like it is mandatory, यहाँ पे लिखा हुआ है it is mandatory for state government to set up family courts for every city or term which exceeds 1 million। तो यहाँ पे अभी we can see that the family courts are directly coming in।
दैट इज कौन सा 2 स्टेज में, हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में। तो इसके लिए 2-3 सबसेक्शंस घुसाए हैं। ओके, सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 1, देन वी कैन इवन सी दैट this particular articles or this particular sections contains both the provisions of for establishing of family courts in both Himachal Pradesh as well as Nagaland. Okay, and even if I go about section 3A, which is newly been inserted, तो ये डायरेक्टली बोलता है कि लाइक इट शुड वैलिडेट ऑल एक्शंस अंडर द एक्ट टेकन बाय द गवर्नमेंट within this respective states, and the family courts of the state will directly perform retrospectively. Retrospectively मतलब क्या, आज से जिस दिन से ये लागू हुआ है उस दिन के पहले जितने भी डिस्प्यूट्स है दे विल नॉट डायरेक्टली सी। ये कब से देखेंगे, सपोजली ये अगर आज लागू होगा तो कल और या आज लागू होने के बाद से they will directly look forward the cases that is directly coming under the family code mechanisms. तो वो होता है क्या, retrospective effect. Okay, so all the actions that are under this respective act, including everything, they should be deemed to be valid from these dates respectively that was mentioned under the category of Himachal Pradesh as well as Nagaland. तो ये एक रेस्पेक्टिव थिंग है। यहाँ पे थोड़ा प्रोटेस्ट चल रहा था विद द रेस्पेक्टिव ओपोजिशन, ओके, लेकिन फिर भी राज्यसभा में इसको पास कर दिया गया। ओके, सो इट वाज अ स्मॉल पर्टिकुलर न्यूज व्हिच एसोसिएटेड विद अस विद द रेस्पेक्टिव फैमिली कोड। इसके बाद आते हैं हम लोग चीता रिलोकेशंस पे। ओके, व्हेन आई से अबाउट चीता, ओके, मैं अगर चीता का बात बोलूं, ओके, तो व्हाट 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 दिस पर्टिकुलर एनिमल that is cheetah is directly can be categorized as, see, cheetah is one of the oldest and of the big cat species. ये सबसे पुराना और सबसे बिग कैट स्पीसीज है with ancestors that can be traced back more than 5 million years to even the Miocene era. ओके, हम लोग पढ़ते हैं प्लेस्टोसीन, मियोसीन, होलोसीन, तो ये सब जो पढ़ते थे तो ये मियोसीन एरा के, ओके, इन द जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो मियोसीन एरा मतलब क्या, दैट इज अराउंड 5 मिलियन ईयर्स अगो, and the cheetah is also the world's fastest land mammal that lives in both Africa as well as Asia. ओके, लेकिन हम लोग का एशिया में अभी चीता, इवन इफ यू सी दैट इफ आई हैव टू सी इन कंट्रीज लाइक इंडिया, ओके, व्हिच इज एन एशियन कंट्री, यू कैन नॉट फाइंड अ सिंगल एशियाटिक चीता ओवर हियर. इट इज डायरेक्टली वेरी मच ऑफ एक्सटिंक्ट इन द रेस्पेक्टिव एरिया ऑफ इंडिया. तो अगर मैं आयुसियन स्टेटस देखूं दोनों का, अफ्रीकन चीता का देखूं, एशियाटिक चीता का देखूं, तो आयुसियन चीता, अफ्रीकन आयुसियन स्टेटस ऑफ द अफ्रीकन चीता इज वेलनरेबल, but the IUCN status of the Asiatic cheetah is very much of critically endangered. ओके, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि लाइक दिस पर्टिकुलर एरिया, आज अगर मैं अगर एशिया का बात बोलूं तो हार्डली 40 या 50 हम लोग को एशियाटिक चीता मिलेगा, और वो भी पर्टिकुलरली एक कंट्री में विच इज नोन एज ईरान, बस ईरान में ही मिलेगा, इसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा. लेकिन you can find that around 6,500 to 7,000 African cheetah is present in the wild in the African nations. Okay, and you can see that the majority of the cheetah that is found over there is in Nigeria में देख सकते हो, ठीक है, that you can see in South Africa. Okay, so Nigeria, South Africa, Botswana, these are the African states where we can find a respective wide number of cheetahs. Okay, and we are directly planning to directly translocate some of the cheetahs from these respective areas to live at the Kuno Palpur National Park in Madhya Pradesh, because the very condition of Kuno Palpur National Park is very much suitable and as a habitat and adequate prey base for the respective cheetahs which are directly in present in the respective areas of African jungles. तो इसीलिए ये सब लोगों ने रिलोकेशन के लिए इंडियन ऑयल एनटीसीए, एनटीसीए मतलब क्या होता है, एनटीसीए इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ अ, so you can see that the cheetah, which is very much less in areas like Asia or in areas like India, Afghanistan, Pakistan, where in once upon a time the cheetahs rose to a very good number of field. So this particular areas or this particular for the reintroduction of the cheetah in these respective areas, we are cooperating with some of the African nations associated and alongside taking both NTCA, Indian Oil Corporation, and we have signed MOUs for these respective relocations.
Okay, even the last year 2021, the Supreme Court lifted its 7-year long stay on a proposal to introduce African cheetah from Namibia into the Indian habitat. So now we are very much free to directly reintroduce the cheetah in our respective country. Okay, तो ये एक particular news in transition है. When it will be re-specified, obviously at that point of time I will explain this particular part to you again. Okay, coming to the next one, that is Assam houses damaged in floods. Okay, अगर मैं देखूं about Assam, okay, if you see about Assam, Assam is being fed with such number of rainfall activities, such number of flooding activities every particular years. Okay, हर दिन हर साल, okay, कभी कभी एक दो साल बीच में रह जाते हैं, लेकिन we can face a respective number of floods every particular year. Okay, we see that the Brahmaputra Valley that encompasses the northeast part of India witnesses floods almost every year. We know all these such things. And before the onset of the monsoon in Assam, we have seen that this year, even before the onset of monsoon, that there is a very havoc flood that directly submerged crops, destroyed lakes, and dispersed various number of houses. And even the very national park that is famous in Assam, that is the Kazira National Park, is very much in critical conditions. So therefore, when I say about flood, what do you mean by flood? Flood is an overflow of water that submerges the land that is usually. And there are three common types of floods that we can see. One is the flash floods, one is the river floods, and one is the coastal floods. Flash floods कब होता है? Caused by rapid and extensive rainfall. River floods कब होता है? Caused when consistent rain or snow melt forces a river to exceed capacity. And coastal floods कब होता है? It is caused by storm surges associated with tropical cyclones and tsunami. तो ये तीन चार का हम लोग का फ्लड्स होता है. एंड अभी ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई असम गेट्स फ्लड एवरी ईयर. अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, द वेरी फर्स्ट फैक्टर इज द ब्रह्मपुत्र फैक्टर. Assam is directly situated at the foothills of Himalayas, and it also comprises of two valleys, that is Brahmaputra as well as the Barak. The mighty river Brahmaputra originates from Himalayas, enters India through Arunachal Pradesh to the Namche Barwatan, and it then flows on to the Bay of Bengal. And if it flows through the whole length of Assam in an area of 650 km with an average width of 5.46 km, making it the principal river that directly crisscross the floodplains. And since it directly comes from the Kailash range, the river gets highly sedimented by the time it enters Assam because of the low elevation. And due to this flattening of the slope, there is a sudden drop in velocity and the river deposits huge quantity of sediments and other debris collected from hilly terrains on the riverbed and thereby raising the level. तो ये एक मेजर फैक्टर है. Obviously, monsoon is also another factor because यहाँ पे हम लोग monsoon around 2900 millimeters of monsoon rainfall we directly can expect in the areas or in the month between June and July. So therefore, these are some of the factors or these are some of the areas where we can see that because of such number of conditions, such area or such area of Assam is usually impacted by the monsoonal or by the flooding activities. Okay, तो ये एक basic things था. Okay, even obviously we can see about the human intervention. Human intervention भी यहाँ पे बहुत है. Embankments are constructed to confine the course of river. Okay, solution खाली वो नहीं होता है, लेकिन this construction of embankments which started back by the time of the 1960s, but आज भी 6 decades के बाद आज भी यहाँ पे जो हम लोग का construction है ये complete नहीं हुआ. And obviously, successive government have spent nearly various number of crores and crores of rupees on building various embankments, but it is all into failure. So therefore, ये एक बहुत important issues है because अभी हम लोग का आसाम में क्या हो रहा है, population boom हो रहा है. And when population is booming, obviously it puts more pressure on the state's ecology. And if you directly see about the population density of Brahmaputra Valley, if I have to say, supposedly, what happened in 1940-41? 1940-41 के time में, the population density of Brahmaputra Valley was around 9 to 29 per square kilometer. But today, it directly went on to around 398 people per square kilometer. Just imagine the rise. And therefore, we can see that these particular factors are also a very important phenomena which directly change the habitat and course of the river of the ब्रह्मपुत्र रिवर. और एक चीज होता है यहाँ पे क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट फैक्टर इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट वन बिकॉज जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है देन ऑब्वियसली द कोर्सेज ऑफ द रिवर्स, द हैवी रेनफॉल, द मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स आर वेरी रैपिड एंड देयरफॉर इट्स ऑल्सो गेट्स फ्लडेड. ओके, सो जो फ्लड्स होता है
ये हम लोग को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट कर देते हैं। काजीरंगा में बहुत जानवर मर जाते हैं, ठीक है। the respective highways, okay, that is the NH37 highway, it gets collapsed, okay, ये पूरा ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ह्यूमन एनिमल कंफ्लिक्ट होता है, इफेक्ट्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर्स होता है, ट्रेन सर्विसेज डिस्टर्ब होता है। जैसे अभी हम लोग का एक रेलवे स्टेशन, दैट्स द डिमा हसाओ रेलवे स्टेशन, ये पूरा डिस्टर्ब करके चला गया, ठीक है। इफेक्ट ऑन द कॉमन लाइव्स आर देयर, ओके। सो यहाँ पे बहुत कुछ चीज हम लोग को करना पड़ेगा। So, to tackle all such number of areas, we have to see that the information that is rendered with respective to the sharing of the volume of water in the Brahmaputra river is also very important. Okay, obviously constructing the sluice gates, okay, is very important, and also preparing the people for some form of disaster management is also a crucial step in this particular direction. तो ये दो तीन चीज है which directly associates us with the respective area or with the respective thing of Assam and its respective river, that is Brahmaputra. Okay, going to the next one. आते हैं हम लोग सोमालिया के थ्रॉट्स। ओके, सोमालिया, अगर मैं सोमालिया का बात बोलूं तो वेयर इज पर्टिकुलरली सोमालिया? सोमालिया इज डायरेक्टली अ एरिया which is located in the वेरी हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये जो देखते हो ये वाला एरिया, इसको हम लोग बोलते हैं हॉर्न, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, बिकॉज हियर वी कैन सी अ लॉट मेनी नंबर ऑफ or because we can see that in this respective area we can see a lot many number of conflicts from time immemorial। जब से हम लोग पैदा ही हुए हैं तब से सोमालिया में ये कंफ्लिक्ट चलता ही रहता है, ठीक है। हम लोग सोमालिया में हर दिन कुछ ना कुछ सुनते ही रहते हैं। Somalia is always very much unstable in nature just because of such number of conditions that is totally happening here. Okay, अगर मैं सोमालिया का बात बोलूं, ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है कि लाइक द रिपब्लिक ऑफ सोमालिया ये कब फॉर्म हो गया था? 1960s के टाइम में, ओके, एंड इट फॉर्म्ड बाय द फेडरेशन ऑफ अ फॉर्मर इटालियन कॉलोनी एंड अ ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट। तो यहाँ पे ब्रिटिश का डायरेक्ट राज नहीं था, यहाँ पे इटालियन, इटाली रूल करते थे, इट वाज एन इटालियन कॉलोनी, ओके। So Somalia, as I have all told, is directly is in the Horn of Africa and is the easternmost part of Africa. Okay, Somalia is bounded by whom? Somalia is bounded by this particular area of Gulf of Aden. Okay, to the north, Indian Ocean to the east, Kenya and Ethiopia, ये देख सकते हो, Kenya and Ethiopia to the west, and Djibouti to the northwest. Djibouti एक particular area है, दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे, तो एक मिनट, ये देख लो Djibouti यहाँ, this particular area, ये जिबूती है टू द नॉर्थ वेस्ट, एंड जिबूती इज टोटली नोन एज द लैंड ऑफ मिलिट्री बेसिस। ओके, यहाँ पे सबका, एवरी सुपर पावर का यहाँ पे मिलिट्री बेसिस है, उनका इकोनॉमी चलता है थ्रू एवरी अदर्स पीपल्स और एवरी अदर्स कंट्रीज डोनेशंस इन दिस मिलिट्री बेसिस। सोमालिया का अगर मैं कैपिटल बोलूं तो सोमालिया का कैपिटल क्या है? द कैपिटल इज मोगाडिशु, दैट इज जस्ट लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, क्योंकि यहाँ पे इक्वेटर पास, दिस पर्टिकुलरली इज मोगादिशु, और इक्वेटर समथिंग यहाँ से पास होता है, ठीक है। तो देखते हैं कि लाइक सोमालिया इज अ कंट्री, अगर मैं ज्योग्राफिकल एक्सपेक्ट में बात बोलूं तो ज्योग्राफिकल एक्सपेक्ट में सोमालिया इज अ कंट्री वेयर वी कैन सी द क्लाइमेट इज मेनली ड्राई एंड हॉट, एंड यहाँ पे हम लोग को एक रेस्पेक्टिव सेमी डेजर्ट वाला कंडीशंस का यहाँ पे एटमॉस्फेयर मिला, ओके। और थॉर्न बुश सवाना, थॉर्न बुश सवाना, सवाना टाइप ऑफ कंट्री, सवाना टाइप ऑफ कंट्री क्या होता है जनरली? ड्राई एंड हॉट स्पेल, ओके। सो यहाँ पे क्या है कि लाइक द सोमालियन पीपल आर एक्चुअली, यहाँ पे जितने भी लोग हैं दिस आर पर्टिकुलरली क्लैन बेस्ड मुस्लिम्स, ओके, एंड अबाउट 3/5 फॉलो अ मोबाइल वे ऑफ लाइफ। ऐसा नहीं है कि दे आर वेरी मच अटैच टू देयर रिस्पेक्टिव रिलीजन, तो ये कोई लोग नोमैड्स भी होते हैं, ओके, सब परसुइंग नोमैडिक पेस्टोरलिज्म, एग्रो पेस्टोरलिज्म, तो उस टाइप के लोग होते हैं। सी, this area which is known as Somalia is totally in crisis because of some of the respective causes। यहाँ पे फर्स्ट कॉज क्या है? यहाँ पे फर्स्ट कॉज है seasonal changes, because like Somalia, because of its hot and dry conditions, the crops or the agriculture activities are not very fruitful in these locations, and people are struggling a very lot from late 2020 because of the drought conditions prevailing। तो ये एक रेस्पेक्टिव इशू है, हार्वेस्टिंग नहीं होता है, ये एक रेस्पेक्टिव इशू है, ओके। इसके बाद परसिस्टेंट इनसिक्योरिटी, सिंस यहाँ पे अनरिजॉल्व पॉलिटिकल टेंशन है, दो तीन पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कंफ्लिक्ट होता रहता है, ग्लोबल सप्लाई एंड प्राइस टॉक्स में इन लोग का कोई रेस्पेक्टिव लाइक इन्वॉल्वमेंट्स नहीं है। तो बिकॉज ऑफ ऑल सच थिंग्स वी कैन सी दैट every
time, this country is totally unstable in nature, and because to sustain its particular livelihood, the Somalia directly, because the Gulf of Aden is the very important and precise location, because it all connects it to the Suez Canal, and various number of trades are happening through this particular Gulf of Aden. तो ये लोग बन जाते हैं क्या, सोमालियन पायरेट्स। तो ये लोग कार्गो शिप को लूटते हैं, उसको लूट के उन लोग से पैसे लेके सामान लेके ये लोग डायरेक्टली आगे कहीं पे बेचते हैं। So they are the pirates which are directly very much famous in this respective area. तो इसको बोलते हैं सोमालियन पायरेट्स। ओके, तो सिंस इन लोग के पास कोई फूड सिक्योरिटी नहीं है, ओके, इन लोग के पास कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, इन लोग के पास कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, इन लोग का पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट है, हेल्थ इश्यूज है, इसीलिए दे आर वेरी मच इन्वॉल्व इन सच नंबर ऑफ निगेटिव एक्टिविटीज। तो आज ये क्यों न्यूज में है, बिकॉज ये फिर से बोला गया है कि ड्रॉट डिस्प्लेसेस इतना पीपल इन सोमालिया। ऑब्वियसली मैंने बोला ड्राई एंड हॉट है, ओके, ये फ्रॉम टाइम इमेमोरियल दे आर फेसिंग ड्रॉट। ओके, तो अब ये लोगों के ऊपर गुस्सा हो गया, क्योंकि ड्रॉट जहां भी देखो, हम लोग के विदर्भा एरिया में which is directly at the leeward side of the western ghats is also a drought affected condition area, but फिर भी the people over there is not directly dying out of poverty, out of some type of food insufficiency। तो बिकॉज यहाँ पे टोटल गवर्नमेंट फेलियर है, यहाँ पे वो लोग इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, therefore we can see that this have directly made some 9,18,000 people in Somalia amongst the most poor nation of the whole world। ओके, इसीलिए इन लोग का हेल्थ इश्यूज, हेल्थ कंडीशंस बदतर होते जा रहे हैं, पॉलिटिकल टेंशन ज्यादा होते जा रहे हैं, क्रॉप फेलियर्स होते जा रहे हैं, इन लोग का जितने भी रिसोर्सेस है, सिंस देयर इज नो पर्टिकुलर गवर्नमेंट टू टैकल दिस रिसोर्सेस, इन लोग का रिसोर्स भी फ्रीली लोग उसको खुदाई करके लेके चले जाते हैं, उसको बेचते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग इन सोमालिया, एंड बिकॉज दिस टाइप ऑफ ड्रॉट सिचुएशंस सोमालिया इज फेसिंग एज ऑफ टुडे। तो ये थोड़ा एक ब्रीफ स्केच था अबाउट सोमालिया। ओके, द very last, not the last, the second last element, that is the rare earth element। ये एक छोटा सा टॉपिक है, मैं बता देता हूँ बस, ठीक है। देखो, when I say about rare earth material, okay, तो ये rare earth material होता क्या है? When I have to say about rare earth material, तो ये rare earth material होता क्या है? हम लोग पढ़ते हैं rare earth material, हम लोग देखे थे, you can see in this particular thing, हम लोग जानते हैं rare earth elements के, this is our respective periodic table। okay, तो अगर define करूँ rare earth material को, तो rare earth materials are a group of 17 elements, okay, and they are very much lustrous in nature, and they are very much silvery white soft heavy metals। तो ये क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ 17 एलिमेंट्स होते हैं, जिस लाइक ये लेंथेनम हो गया, सीरियम हो गया, ठीक है, देन यू कैन सी अबाउट इथ्रियम, एल्बियम, यूरोपियम, होल्मियम। तो ये सब 17 रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं। So this rare earth metals occurs in many other minerals and are recovered as byproducts। ये लोग डायरेक्टली नहीं मिलते, ठीक है, ये एज अ बाय प्रोडक्ट मिलता है, आइदर फ्रॉम फॉस्फेट रॉक और फ्रॉम स्पेंट यूरेनियम। तो ऐसे हम लोग मिलते हैं, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर रेयर अर्थ मटेरियल्स, ये वी कैन सी दैट द टोटल वर्ल्ड का अगर मैं बात बोलूं, तो इट इज एस्टिमेटेड दैट देयर आर अराउंड 121 मिलियन टन्स of rare earth oxides inside the earth crust, and amongst this 121 million ton, only 44 million ton is only with China only। चाइना के पास ही 44 मिलियन टन है। तो अगर चाइना के पास ही 44 मिलियन टन है, then I can directly say that China accounts for 90% of the world's rare earth production। उसके बाद कौन आता है, उसके बाद चाइना के बाद आता है कोई, मान लो ब्राजील आ जाएगा, वियतनाम आ जाएगा, रशिया के पास भी बहुत सारा है, तो उसके पास आ जाएगा। लेकिन चाइना होल्ड्स द लीडिंग पोजीशन अमंग द प्रोड्यूसर्स ऑफ रेयर अर्थ विथ 140,000 टन्स। बहुत ज्यादा चीज है इन लोग के पास। ओके, सो देयरफॉर वी नो दैट पोस्ट कोविड India also wants to introduce its respective membership towards such number of groups, because India is also fond of such number of rare earth metals। क्योंकि आज अगर मैं ग्लोबल कंजम्पशंस के बारे में बोलूं, तो इन 2019 ओनली द यूएस इंपोर्टेड अराउंड 80% ऑफ इट्स रेयर अर्थ मेटल्स फ्रॉम चाइना, एंड यूरोपियन यूनियन गेट्स 98% ऑफ इट्स सप्लाई फ्रॉम चाइना। और ये डिमांड क्यों ज्यादा पता है, just because of its use in some of the high-tech goods and components like automotive catalyst system, fluorescent lighting tubes and display panels। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा हो जाता है। ओके, एंड दे वर्क वेरी मच ऑन क्लीन एनर्जी विच इज द नीड ऑफ द आवर टुडे। आज हम लोग सोच ही रहे कि हम लोग क्लीन एनर्जी को कैसे बढ़ाए, कैसे हम लोग ने एक्सपेंड की। तो therefore the traditional use of some rare earth material is now today, because हम लोग जैसे अभी इंडिया क्यों इतना यहाँ पे इंक्लूजन करना चाह रहे हैं, because now इंडिया is very much moving towards the hybrid economy।
हाइब्रिड व्हीकल्स बनाना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाना चाहते हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज बनाना चाहिए, सोलर पैनल्स बनाना चाहते हैं। सो ये सब किससे बनेगा? ये सब बनेगा इन रेयर अर्थ मेटल्स। And the 21st century's need of electric vehicles, wind turbines, drones are all on the basis of this rare earth metals. तो ये बस एक पर्टिकुलर इशू न्यूज इन ट्रांजिशन है, जस्ट बिकॉज इंडिया डायरेक्टली वांट्स अ रेस्पेक्टिव इंक्लूजन इन द सप्लाई पार्टनरशिप ऑफ रेयर अर्थ मटेरियल्स where every other country is directly lending its perspective based from China. Okay? ये एक पर्टिकुलर न्यूज है अबाउट रेयर अर्थ मेटल्स। ओके, देन लास्टली अबाउट रिमेंबरिंग एन एक्सपल्शन इन अपॉर्चुनिटी। तो ये हम लोग का एक पर्टिकुलर न्यूज है specifically assigned to Uganda. Okay, we know about a country or African country of Uganda, which can we say that India is very much today interested towards this particular nation of Uganda. Okay, and India already signed, because we know that by the time of 2018, as a part of the three nation African tour, PM Modi was on a 2-day visit to the country of Uganda. And this particular country was visited by a respective prime minister after 1997. So therefore it became important. So we can see that it has directly made some MOUs or some of the various areas of cooperation, exemptions for officials and diplomatic passport, cultural exchange, in सब में हम लोग ने कुछ बात किए थे. And India will also assist Uganda, because India also knows that Uganda is slowly developing. It's not a fully, it's a particular slowly developing nation. ओके, इन लोग का इकोनॉमी भी इतना स्ट्रांग नहीं है। ओके, इन लोग का जो कैपिटल है युगांडा के, जस्ट लाइक यू कैन सी अबाउट कंपाला, तो कंपाला इज आल्सो नॉट फुल फ्लेजेड गुड सिटी। तो ये सब थोड़ा बहुत इन लोग का एक डिस्प्यूट चल रहा है, एंड बिकॉज ऑफ सच नंबर ऑफ थिंग्स इंडिया इज वेरी मच एंथुसियास्टिक टुवर्ड्स इट्स प्रेजेंस इन युगांडा। ओके, एंड इंडियाज लाइक अगर मैं बोलूँ कि युगांडा 1960s में आया था यहाँ, तो ये जो युगांडा का लिबरेशन था, ये युगांडा का जो इंडिपेंडेंस मिला था, तो युगांडा का इंडिपेंडेंस में भी इंडिया का जो नेशनल फ्रीडम मूवमेंट है, वो भी एक पर्टिकुलर इन लोग के ऊपर एक असर पड़ा था। And India's freedom struggle inspired early Ugandan activities to fight against the colonialism, and country thereby achieved independence by around 1966. Okay, so therefore India slowly and slowly by around 1965 established diplomatic presence. Okay, and therefore we could see that it led to a number of Indians to settle in East Africa, and many made Uganda their respective homes. तो यहाँ पे इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज ऑफ द close affinity that we share, because of the respective number of individuals from a country like India that goes and settle over there, we could see that we can directly make some number of cooperation with the respective country on the basis of some type of cultural linkages. And this is the growing soft power that India has of today in this perspective world. तो ये एक पर्टिकुलर छोटा सा न्यूज था। यू जस्ट हैव टू लोकेट द रिस्पेक्टिव एरिया ऑफ युगांडा, इसके अगल बगल में कौन सा एरियाज है, इफ इट्स अ पर्टिकुलर लैंडलॉक एरिया और नॉट, ये कौन सा एरिया में आता है, साउथ अफ्रीका में आता है या वेस्ट अफ्रीका में आता है, नॉर्थ अफ्रीका में आता है या ईस्ट अफ्रीका में आता है, वो सब देखना है। इंपॉर्टेंट रिवर्स देखना है, इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस देखना है। तो दैट्स समथिंग वेरी मच रेलेवेंट इन दिस रिस्पेक्टिव कंटेंट। Okay, so that's all for today. You have got all these respective 5 questions. Obviously, you will get this particular answers of these questions in the respective Telegram channel of us, and you can directly go for a respective mains questions, which you can attempt here also in the comment section, or you can directly update it in the respective Telegram group. So thank you for today. We'll hope to see you again tomorrow. Jai Hind. Goodbye.